Homeopathy College. Dr. Kapoor, Senior Professor. Our speaker, main speaker, Dr. H.S. Matharu, and other speaker, Dr. Jagpal and Dr. Subra. It is a great honor for me to welcome all the delegates in our esteemed institute, Lord Homeopathy Medical College, Ludhiana. I welcome esteemed members of the Institute of Homeopathy and doctors and dear students. We have gathered here today to pay our heartfelt homage to the memory of Dr. Ramakant Jagpal, a renowned homemaker. As we come together on this occasion, we remember a dedicated healer who left the indelible mark on the field of homeopathy. His commitment to excellence and compassionate care has inspired generations of practitioners and continue to resonate within the corridors of Lord Homeopathy Medical College and Hospital Ludhiana. His unwavering commitment to the well-being of his patients, his deep understanding of homeopathic principles, and his compassionate approach to the healing has left an enduring legacy. Today we reflect on his life and work, which have touched the lives of countless individuals. His tireless effort to advance the practice of homeopathy have not only brought relief to the suffering, but have also enriched our understanding of holistic healing. Thank you. Welcome to again in this esteemed institution. Now I would like to request our worthy director of LMS, Dr. Abhinav sir, to share his words. Respected dignitaries sitting on the first row and dear colleagues, Homeopathy from the different parts of Punjab. So today we are having a one-day seminar in the loving memory of Dr. Ramakant Jagpal. Basically, last time when the election of this seminar, I was there. That time, मैं एक रिक्वेस्ट की थी कि वेबिनार जो है या वेबिनार टाइप का मीटिंग जो होती है उन्होंने अवॉइड करके फेस टू फेस डॉक्टर ना इंटरेक्शन करो वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक अच्छी बात है कि IIHC ने पहला स्टेप आज जो रहेगा अब आज सेमिनार कर रहे हैं कि ये सेमिनार जो रहेगा ये मकसद जो है अपने आप को फ्रेश होना नॉलेज हर डॉक्टर को है अपने नॉलेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नॉलेज लिमिट कोई भी नहीं है जितना मर्जी सीख लो थोड़ा ही थोड़ा नॉलेज लाइक एंड वी आर सिटिंग ऑन द one edge of that sea. नॉलेज वास्ते जिन्ना भी कुछ सीखोगे थोड़ा ही रहेगा इस मेंटालिटी का जो सेमिनार हो रहा है तो वो बेनिफिट देगी नाल दी नाल जो कोई भी सेमिनार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਸ਼ੀ ਕਰ
The IIHC in memory of Dr. Ramakant ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਹੀ ਸੀਗੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ since day ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ तो कोई चांस ऐसा नहीं सीगा कि हर महीने ਅਸੀਂ नहीं मिलते सी किसी ना किसी काम ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਦੀ ਇੰਟਰਸਟ पर्टिकुलरली पंजाब के विच लोग बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੇਨਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਈਐਚਪੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈਐਚਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ मैं बहुत काम किया है सोच भी रहे हैं कि किस तरीके ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਚਪੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਿ मैं साढ़े ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਚਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ IHP ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ बहुत ही अच्छी गल है कि मैं ये सारे प्रोग्राम वास्ते ऑर्गेनाइजर हूँ स्पेशली IHC के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बाकी सारे ऑर्गेनाइजर बहुत बहुत मुबारकबाद देना है थैंक यू Now I will request Dr. Sushil Salotra, the Dean of Homeopathy Medical College and Hospital, to come up and bless us with some golden words. On the dais of the dais, distinguished guests, doctors, students, Dr. Ravinder Kochar, director, has elaborated many aspects in a very short time. He has touched all the aspects. It is a fact that homeopathy has grown many fold in the last few decades. People, they love homeopathy. They love to take homeopathic medicines. They consider homeopathy as second popular choice for healthcare. But people, they hesitate for putting their children in homeopathy. I remember when this college started in 1976 with the IIHC diploma course, we were having 120 seats in this college. And we are having two sessions, morning session and evening session, comprising of 60 seats in each session. And the number of boys, around 70%, it slowly, gradually declined and reversed. With evolution, there was a need to develop more homeopathic institution, and fortunately we are having 6 homeopathic institutes in Punjab. But now the situation is very clear. We are having
approximately 2 homeopathic institutes in Punjab, and out of those two, one is still struggling. Even we are struggling. We are getting half of the sanction fees. There are many factors affecting this scenario, but general interest of public and students and candidates that has declined. So that is a matter of concern. How many of us and how many established people they want to join homeopathy as a profession? So that is a matter of concern. Otherwise, as far as our system is concerned, globally, if we see the system is being practiced in more than 100 countries. It is being popularized daily. And many organizations, they are participating just to encourage the system. And IIHC, of course, is one of them. I'm fortunate that I was privileged to be the president of Ludhiana unit of IIHC first time when it was started. At that time, there was a lot of encouragement among the homeopaths. Then gradually it declined, but now Dr. Ravinder Kocharji, he had been at a very high post in the central this body of IIHC. He has encouraged the people of Punjab, practitioners of Punjab, students of Punjab to join this organization, because this is the only organization in India which constitutes the association of qualified homeopathy practitioners or qualified doctors. So we must encourage this system from all the platforms, from student side, from study side, from education side, from practice side, as well as from the research side. So at this occasion, it's very different kind of scenario today, that on one side we are paying homage to one legend of homeopathy, our deep sense of grief and condolences are with the family. And on the other hand, since we are lightening towards the brightness of the homeopathy by organizing this seminar, I extend my warm welcome and good wishes to the speakers and also to the delegates, that they will have some out of this. It is a sort of manthan, so we'll get something from this seminar. So go for the best for this seminar. Thank you. Now I would like to call upon Dr. Meenu and Dr. Praveen to facilitate our worthy principal sir, Dr. Vinod Singh. I would like to call Dr. Yadvinder ma'am and Dr. Vipin sir to honor Dr. Ravinder Kocharji. I would like to call upon stage Dr. Pradeep Saini and Dr. Mahajan to honor Dr. Sushil Salodra sir. As we all know, on 26th October 2023, we launched a priceless gem of homeopathy, Dr. Ramakant Jagpal. We wholeheartedly dedicate this seminar to Dr. Jagpal.
His contribution to homeopathy is far beyond explanations and words, and who can articulate better about a father than a son? So I would like to call upon stage his loving son, respected Dr. Manish Jampal, to pay a heartfelt tribute to late Dr. Ramakant Jampal. Please welcome him to the big round of applause. Thank you. First of all, my respect to all the seniors and principals, sir, Silotra sir, Dr. Kuchal, Matharu sir, Dr. Sofa, and all the seniors. I would like to thank IIHP and the whole high table for dedicating this seminar to my father. It's a privilege and honor, and it's a gratitude from my side that along with dedicating this seminar to my father, they have given this opportunity, this stage to me for sharing the whatever little knowledge I have with all of you. It's very heavy-hearted for me to share life of my father, a legend in front of you. कुछ शख्सियतों को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, but still I will try my best to share the journey of his life. He started his life at a very ground level. Conditions of home were not very good. 2.5 रुपए दिहाड़ी तो उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी. You can imagine. He pulled rickshaw, he sold milk, worked as a laborer. There was a vision behind that. He joined PAU as a clerk, and पुराने लोग सारे जानते होने डॉक्टर MS रंधावा होते होंगे सीगे. We used to manage PAU and everything, and he saw some skills in him and hired him as a clerk, his driver, and multiple tasks he used to do. PAU अगर आप गए हो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. If you will go and see sometime, it was his labor job there that he did in that. सोच सीगी बहुत ऊंची, and there was an interest to become doctor, but ਘਰੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਬਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਿਆ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ. ਉਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਡ his elder sister, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ, she was a teacher. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ so that he can, complete his aspirations to that. And ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਸੁਨੇਤ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਪਰ as
Hahnemann's thought, he was not very satisfied with that kind of practice somewhere. Because ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਆਂਦੀ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। मैं बड़ी clearly, I'm sorry, I'm a person who is very transparent, so I'm just sharing what it was as it is and how the transformation happened. Duplicate, हाँ, very good, thank you. भूल गया यार विंडोज वाला सब। Yeah. So there is a 60 by 51 millimeter of a space occupying lesion in the interpolar region of kidney. So there is post-void urine also. It's very important how to read the reports, understand what's the pathology, what could be the prognosis, आगे क्या हो सकता है, कैसे proceed करना है। तो स्कैन आगे किया गया तो शक पड़ा कि it can be a neoplasia, renal cell carcinoma, and patient was planned for surgery. आप सिचुएशन देखो कितनी सीरियस है। सब रिपोर्ट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। I don't know, because of I don't know how to recover that, because I have to change the computer from, yeah. Yes, it is there. Just give me a second. You can see here, patient was taken for surgery, but operation was deferred. पेट खोल लिया और खोल के ऑपरेशन नहीं किया, because the tumor was so advanced that it was inoperable, and inoperability was explained to the patients and attendant, इसको घर ले जाओ, सर्जरी नहीं हो सकती है, घर जाके मैनेज करो। So with some hope, patient came to me, and it was not a full blown case taking, but as the patient came, क्या होता है कई बार आप पेशेंट आता है, आप उसको बोलते हो नहीं अपॉइंटमेंट लो, I think you lose the moment of heat at that time. वो जिस टाइम आपके पास तकलीफ लेके आया है, there is a heat in the moment, and that's the time you can get the gold out of the history. उस अपॉर्चुनिटी को मुझे लगता है मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा केस लिया। He told me कि 8-9 साल से ये तकलीफ चल रही है मुझे, और यूरिन में कभी ब्लड आता है, कभी पीसेस आते हैं, लेकिन
गरीब होने की वजह से मैं कुछ खास किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाई हूँ। कभी पेन किलर खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होती है तो इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। एंड एज यू नो, पेन किलर्स also have a very bad effect on kidneys. तो अभी डॉक्टर को क्यों दिखाया? क्योंकि पेन किलर्स ने काम करना बंद कर दिया है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई यूरिन में। इतनी पेन हो रही है, वॉमिटिंग्स आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। शी इज डूइंग स्टिचिंग एट होम, क्योंकि हस्बैंड भी अभी सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा कमाता नहीं। She is the main source of income in her family. और उसका मेन वरी क्या है कि मेरे बच्चे, यंग सन, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। अब देखो, हिस्ट्री में पेशेंट कुछ भी आपको फ्लो में बोलेगा, जो भी बोलेगा उसको बोलने दो, उसको एक्सप्रेस करने दो, और देखो उसमें से क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है। टाइम आज कम है, बट जितना मैं अपनी तरफ से अपनी सोच आप लोगों से शेयर कर सकता हूं आज करूंगा। तो उसको, वो इतनी मेहनत नहीं करता है डॉक्टर, सोहल है गया, छेती थक जाता है, इन्ना नहीं पढ़ता, हार्ड वर्क नहीं करता, मेहनत नहीं करता। मैं चाहती हूँ बहुत मेहनत करे और बहुत ऊपर जावे लाइफ। You can see the ambitious nature of the patient here, not only for herself but also for the son. शादी से पहले कंडीशंस घर में जो थे अच्छे नहीं थे, यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे खुद के फादर, ही वॉज ड्रंकर्ड, बहुत पीते थे, घर में कलेश रहता था, और मैंने माँ बाप को लड़ते हुए ही देखा हमेशा, कभी शांति नहीं देखी घर में। और मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप लव हेट था। मैं उनसे प्यार तो करती थी, पर मुझे कभी वापस प्यार नहीं मिलता था। और पिताजी से ये गिला भी रहता था कि वो पीते हैं और घर का कंडीशन नहीं देख रहे हैं और सब। तो मुझे लगा ये फैमिली, मेरे भाई बहन, वो सब और बर्बाद हो जाएगी, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। और बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की, देखो 8-9 साल से डॉक्टर साहब ये बीमारी चल रही है, लेकिन मैंने इसको टोटली इग्नोर करके पेन किलर इंजेक्शंस लेके बस काम करती गई, हार्ड वर्क करती गई, हार्ड वर्क। दर्द में भी काम करती गई, गरीबी मिटानी है। और पेरेंट्स, माँ का अपना दुख था कि हस्बैंड पीते हैं, क्या करे। तो माँ से भी अप्रिसिएशन नहीं मिली कभी। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिजायर फॉर अप्रिसिएशन फॉर हर एफर्ट्स। शी इज अ वेरी हार्ड वर्कर, वेरी एम्बिशियस, बट imagine 8 to 9 years undergoing cancer and all that, taking injections of painkiller and kept working. स्कूल में एक टीचर ऐसे मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया, हेल्प की, गाइड किया, थोड़े पैसे की भी मदद की, और जिनकी वजह से मैं थोड़ा पढ़ पाई। मेरे घर वालों को नहीं मालूम कि मैंने +2 कैसे की, उनको शायद पता भी नहीं है कि मैंने +2 की है। घर में जो सिचुएशन थी चलती रही, लेकिन मैं अपनी मेहनत करते लगी रही। मैंने पूछा क्या एक्सपीरियंस रहा, इस तरह की जिंदगी का एहसास क्या रहा। एहसास डॉक्टर साहब एक गिला रह गया कि पिताजी से कभी एप्रिसिएशन नहीं मिली, उन्होंने कभी मेरी इतनी मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं किया। और आज अगर वो होते तो I would have felt good.
कभी घर घर लगा ही नहीं, कभी लगा ही नहीं that I belong there. तो feeling of belongingness missing थी. I felt I was never included as a part of a family. So I'm concising the history for you, but I've shared the whole gist of the case. Hobbies, sports में हमेशा active है. Dreams of accident, mutilations, जैसे बाजू कट गई, सिर कट गया, खून खराबा हो रहा है, वॉर जैसे सीन्स चल रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं. And heaviness of breasts before periods, and history of frequent UTI, which was heavily suppressed by allopathy. So, anybody would like to share their? वेरी इंपॉर्टेंट. और ये केसेस जो है ना आजकल इतने ज्यादा होते हैं, मैं अपने प्रैक्टिस में ये कहूँगी मतलब ऑलमोस्ट फीमेल जितनी भी आती है ना उनके से 95% ऐसी ऐसी. थैंक यू. I got it somewhere it resonated. Yes. With me, right? And very good suggestion that something like carcinosis, right? Any more suggestions? You don't need to be right. जो भी आ रहा है मन में. Neglected from everywhere. Very good. So what Sita is saying is forsaken feeling कहीं ना कहीं बहुत important है. You agree or not? She wants appreciation from, especially her father. हाँ, जो एक गिला रह गया, कुछ ऐसी फीलिंग रह गई कि यार. Speak in the mic so everybody can listen. Is she having kind of an absent father syndrome like that? You can say that. You can say that. Of course. उसको जोड़ेंगे सब फीलिंग्स को बाद में. But let us see this. Carcinosis like that for appreciation, for sake of feeling. Disappointment ही है. She said love-hate relation. और फादर के जाने का इतनी भी वो चले गए. आज होते हैं तो देखते हैं कि मैं कहाँ पहुंची हूँ. I'm really happy Dr. Pocher ने आज काफी ऑनलाइन हो गया. आपने सामने बात में जो मजा है, जो आनंद है, वो स्क्रीन पे नहीं आता. एंड यू सेड कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी को इग्नोर करती रही. So hard work, taking painkiller, working, ignoring that. इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कैसे अंडरस्टैंड करेंगे इसको? होना चाहिए ना ये पार्ट ऑफ लर्निंग. एनी मोर? एंगर भी है. हाँ, और एक डिलीजेंट से क्योंकि नीचे से वो चाहती थी कि उसका बच्चा जो है वो पढ़े. और ये भी दैट्स व्हाई वो रगड़ती जाती है. शी वाज द ड्रैग. जो आप दूसरों को करना चाहते हो बेसिकली आपकी खुद की इस मोहल है, मेहनत नहीं कर पा रहे आप, है ना? चलो लेट्स अंडरस्टैंड. I'll share my feelings, my thoughts. Death of loved one, need for a father-like figure or a master. Appreciate. Shabash. All अच्छा. Very good.
That was a vacuum that she felt should be filled by somebody. अगर वो टीचर से मिली वो चीज तो मैं बहुत अच्छा लगा और अच्छा परफॉर्म किया, वेरी एफिशिएंट। गरीब घर में तो सब पैदा होता है, लेकिन हमारा पूरी जिम्मेदारी ले लेता है पूरे परिवार की अपने भी छोड़ो, इन-लॉज की भी जिम्मेदारी उसने ली, बच्चों की एंजाइटी और बहुत अनसेंशियस ड्यूटी रिस्पॉन्सिबल। अब इसको देखिए, किंगडम डिफरेंशिएशन में सिंपल सी आपको मैं 3 फंडे बता देता हूं। If things are affecting you, it is like a plant. If there is something wrong in me, it is a mineral. If you are blaming a situation or other person, there is a me versus you, then it is an animal. और हो सकता है इस केस में, क्योंकि हमें बहुत अपॉइंटमेंट देके डिटेल में नहीं दे, बट देयर इज एन एसेंस, देयर इज अ subtle expression of an animal kingdom here. Circumstances, partner की वजह से, लड़की की वजह से, कोई मुझे appreciate करे. You can see there is one me and one other. Again and again it's repeating in the case. तो अगर हम एनिमल के बारे में सोच रहे हैं, तो is it a predator animal? No, it's a victim animal जो कि सफर हुआ है, जिसने सहा है और सहने के बावजूद बहुत करती गई है। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग कि उसने अपनी डिजीज को इग्नोर करके लगी। एंड देयर वाज अ नीड टू बिलोंग, नीड टू एप्रिसिएशन। मैं खुद के घर में अपनी फैमिली को बिलोंग करना फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मैमल्स टू बी इंक्लूडेड इन अ ग्रुप, to be part of a group. कौन सा मैमल सोच सकते हैं हम? लैग कैन, वन सजेशन इज लैग कैन, वेरी गुड, बहुत अच्छी सजेशन है बेटा। बट क्या अभी हमारी नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है, तो इफ शी एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ डॉग, डॉग में क्या बहुत क्लोज हो आप बेटी के, बाय द वे आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, बट क्या डॉग इतनी मेहनत करता है? एप्रिसिएशन चाहिए डॉग मास्टर से, उसके लिए सब करेगा, ब्लेम भी करेगा, हाँ ये भी कर रही है ब्लेम, वो सर हाँ वो वैसे भी कर रही है, ये अपना लगे रही। लैग डेथ की सजेशन आ रही है। व्हाट इज लैग डेथ? इज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और उसमें क्या अब्यूज की हिस्ट्री ज्यादा है। लैग डेथ भी बहुत मेहनत करती है अपने परिवार के लिए, लेकिन उसके साथ साथ लैग डेथ का क्या है, बहुत कंप्लेनिंग रहती है कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मुझसे बहुत काम लिया जा रहा है। बट ये तो खुश हो रही है, काम लोग एप्रिशिएट करो और काम लो, तो मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगी। He's not a sheep-like, cow-like, not like just important mammals. कभी differentiation फिर डिटेल में करेंगे, but just understanding this case. एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ, स्टोइक। स्टोइक, आप अपने मोबाइल पे डिक्शनरी खोल के उसका मतलब देखो क्या होगा। STOIC, स्टोइक। What is it? Person who can suppress his emotions, his pain, his suffering, and still continue to work hard. ये हिस्ट्री जो है, इतनी पेन में इंजेक्शंस दे के साथ में काम करते हुए लगे रहना, अपने दुख को इग्नोर करते हुए लगे रहना, it is not a part of dog or cow. और साथ में ambitious, लैग इक्वालिटी। अच्छा, अब ये तो स्टोरी पार्ट हो गया ना, केस का एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
बट थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए. इट्स अ लेस प्रूव्ड रेमेडी, not in the first initial polycrest remedies by Hahnemann. But still, if we relate the case and the story of Brachyphymus, you can see it's very precisely pinpointing the whole history. क्या है थोड़ा Brachyphymus का मटेरियल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैं जो भी कर रहा हूं ना मेरी खुद की तसल्ली हो रही है कि मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूं, ना कोई और मुझे अप्रिशिएट कर पा रहा है. और अप्रिशिएट मिल भी जाए तो भी वो कम लगता है, थोड़ा लगता है. और अप्रिशिएशन चाहिए, उसके लिए वो और मेहनत करता है. घोड़ा समझ रहे हो ना, महाराणा प्रताप का चेतक क्या जान दे देगा, लेकिन मास्टर पे आंच नहीं आने देगा. Never said, so conscientious that they will be never satisfied out of doing their duty. जितना भी वो करते हैं. जब घोड़ा यूजलेस हो जाता है क्या करते हैं उसको? गोली मार दो, खत्म अब तेरा काम, तू काम कर नहीं रहा. So this fear of becoming useless is a very very important part. और उस fear के पीछे ही तो काम कर रही हूँ, उससे काम इतना करा क्या है? कहीं अगर मैं यूजलेस हो गई तो मुझे अबांडन कर दिया जाएगा फॉर सेकंड. नोबल, डिग्निफाइड, नॉट हॉटी, जेन्युइन डिग्निटी. उसकी क्या बात की, वही जो आपने कहा कि फादर से एप्लीकेशन, लेकिन अगर मैं उसको मैं अगर काम नहीं करूंगी, इनके पास पैसे नहीं है, वो कल मुझे पूछने वाला नहीं है, तो मैं ये क्या उसने क्या कहा? उससे पहले हम अपनी फीलिंग्स और फिक्शन की फीलिंग्स को आपस में मिक्स कर देते हैं. तो आई नो समवेयर शी हैज रेजोनेटेड विद सम पार्ट. I think I should be near the receiver now. तो कहीं ना कहीं वो रेजोनेशन आपसे हुई है, बट कहीं ना कहीं आपको खुद की फीलिंग को वहां रिलेट कर रहे हैं. उसकी फीलिंग क्या थी? उसकी फीलिंग यही थी कि मैं इतना काम करूं, चाहे मुझे जितनी भी दर्द हो रही है, कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी का फायदा कर सकूं, अपने सिबलिंग्स को कहीं पहुंचा दूं, अपने बच्चे को कहीं पहुंचा दूं. नीड टू बी यूजफुल and fear of becoming useless is the center of that. उसका डर ये था. Was she also afraid of losing that validation which she was getting from her mom? Yes, of course. तो घर की अपने घर की सिचुएशन इतनी फादर टर्नड है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, बट वहां जाते हैं उनको क्या लगा, मेरे फादर इन लॉ मुझे अप्रिशिएट करते हैं. तो उस चीज में उसको एक सेटिस्फैक्शन. यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई शी केप्ट वर्किंग इन सो मच पेन. बट इसको चार्जिंग पे लगाओ ये बैटरी. In the meanwhile, more thoughts that are coming.
My intention was to share some new remedy with you, new understanding. ये कोई व्यक्ति और मेल होता है Exactly same, exactly same. We are all human beings. Doesn't matter. Male, female, बाद में पहले तो आत्मा है, human beings है. but male doesn't do. They do, but not like this. मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कुछ और आए। रोज बात करने से पता चलेगा ना क्या है। अंदर जो मेल फीमेल बाहर नजर आ रहा है, जो फेमिनिज्म और मैस्कुलिन फिनोमेना है ना, वो अंदर होता है। बट हमने भूल जाता है कि उसके बच्चे हैं भी या लेट मी कंप्लीट एक्चुअल जो मैस्कुलिन और फेमिनिन फिनोमेना है, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे। 120 किलो का रेसलर सामने आया, केस दे रहा है, एंड कैन यू कैनॉट इमेजिन पूरी केस हिस्ट्री रोई इतने टिश्यू किसी फीमेल ने भी यूज किए जितना उसने कर दिया। तो हमें बाहर का मेल फीमेल नहीं देखना, हमें अंदर का मैस्कुलिन और फेमिनिन फिनोमेना। ऐसी लेडीज है who go on very high post, who dictate, वो क्या है? आधे मेल और फीमेल, अंदर फिनोमेना मैस्कुलिन है। That's why they go to that high place. तो इस फीमेल में भी आप देखोगे बहुत मैस्कुलिन फिनोमेना, साथ में फेमिनिन भी है, दोनों है। ओके So idealistically rigid, dreams of unsuccessful efforts is a central theme of black economy. Pushing yourself beyond body limits. Stoic, हाँ? काम करते 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 कोलैप्स आ जाना, थक जाना, कूद पे गिर जाना। हॉर्सेस को इतना भागना अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली इतना उन्हें बनाया जाता है। Thank you. And these are some pathologies that patient can come with: back pain, arthritis, and हनुमान समझते जो मास्टर ने बोल दिया जय श्री राम वो हो जाए, चाहे पहाड़ उखाड़ के लाना हो। So that matches with the theme of black equality. That's how they work. अगर आपको एक बार रिलेशनशिप आपका हॉर्स से बन गया तो they will do everything for you. They will sacrifice themselves for you. Yeah, and miasms. I know it's a dubious topic, but always understand Honeyland and miasms are different, and modern miasms are different. But ये मिक्स है तीनों miasms का नाम से कैंसर miasm, tubercular miasm, and lupus miasm all. तो जो आपने थी म्यूटिलेशन का देखा, एक्सीडेंट्स का देखा, वो लैपस कवर करता है। और जो थीम एस्पिरेशन का है, कुछ करने का, और जो स्टोरी है वो कैंसर माइंड। सो इट्स फीलिंग ऑफ ऑल थ्री मिक्स्ड टुगेदर। सिंपल रेमेडीज लाइक मिनरल वगैरह विल हैव लेस मैथमेटिक एक्सप्रेशंस। As remedy will become more complex like plant, they can express multiple mathematic things. So it's a complex remedy, not a simple remedy. तो क्या हुआ दवाई के बाद? क्या लग रहा है?
सर्जन ने पेट खोल के वापस भेज दिया, घर भेजा। There is an overlapping of pictures, but you can see these rubrics very clearly. Even from death of loved parents, ambitious, neglected his duty, dreams of excellence, desire to please others. Last scan है मेरे ख्याल से। You can see the underlining को छोड़ दो, पिछली पिछली। The right kidney is normal in size and shape. No, इससे पिछली स्कैन में वो होगी आगे नहीं। किडनी में stones detect हुए थे after the prescription, and with time, this was the report. Only few lithiasis left in left kidney, and that's all. The whole cancer was gone. And I was also, on the 7th sky off. 200. Repetition was depending on the situation, depending on the state that came again. And this was unbelievably a quick result for me. ये देखो rubrics. Infusion's duty over to compare it to. Overdoing the duty. Ailment from disharmony in family. This is Hadley, who especially worked on mammals, and you can see the rubrics. It's not कि हमने सिर्फ mental state cover की, अरे improved remedy है, अभी करनी बाकी है, हो सकता है कौन कौन सी pathologies cover करें और तब clinically पता लगेगा ना, pathologies proving पे थोड़ी आती है। But अगर आपने जड़ को पकड़ लिया है, why not pathological? So there is no doubt. Have faith. Affinity to kidneys, family, love-hate matters. Sensation of burden, ये भाई बहनों का बोझ मैंने उठाया. Affinities to the right side. All mammals, menses before aggravation. Mostly all mammals. नहीं भाई बहनों का बर्डन पहले है, ये सेंसेशन टेस्ट। It's not, हम वर्ड्स पे नहीं जाए, फील को अंडरस्टैंड करें कि हैदरले ने जो काम किया बड़ा यूनिक है. He has worked both on body and mind together. So that's the case number 1. Any queries? Any doubt? Doubt की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, सामने है रिजल्ट. You all want to see one more case or? Huh? Next time there was one more wonderful case. We have short of time. मुझे लगा कि एक केस भी अच्छे से किया जाए. I think you guys will take back. अच्छा, don't get attached to remedies, please. अभी ऐसा नहीं कर. Homeopathy actually works on individuality. सब डिफरेंट है ना, अलग नहीं है. किसको समझे, किसको पकड़े, किसके साथ चले, क्या करें, कहाँ जाए, या नॉर्मल पॉलीग्राफ देके कैंसर ठीक नहीं हो रही है, लैब वाले हमसे कैंसर ठीक हो गया.
My message to all of you is, all were best homeopaths. Okay, आपकी अप्रोच को समझो. केस में पकड़ना क्या है? इस केस में पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वाज बेस्ट, बट द स्टेट ऑफ माइंड वाज सो प्रॉमिनेंट. उसको पकड़ो. जहां डॉक्टर सेगर के रूब्रिक्स लग रहे हैं वो पकड़ो. जहां डेयर मिल रही है विजिटर सर की, डोंट यूज योर single tool on every patient, modify your tool with every patient. देखो क्या मिल रहा है केस में, उसको पकड़ो, और जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ो. नहीं तो वो तो मिस हो जाएगा. Of course, डॉक्टर कैंट ने क्या कहा? मैनर्स आर born in thoughts. सही है. बट अगर थॉट्स मिल ही नहीं रहे केस में, लेट अस से ये ऐसा ही केस एक और आगे रीनल सेल कार्सिनोमा था, उसमें आपको माइंड हिस्ट्री मिलेगी ना. कैंसर ही कैंसर है, एडवांस लेवल. खैर इसका भी था, बंद करके वापस भेज दिया, ले जाओ घर. जस्ट जो केस में शाउट कर रही है ना जी, उसको पकड़ो. With this, I would like to thank all of you. Especially to IIHC, all the high level, all the thank you. God bless you. All of us are misty-eyed tributes, but at the same time, he is so determined to walk on the path shown by his medical contributions to homeopathy. Now, I would like to call upon stage Dr. Yoginder Kochar, Director of LMH, and Dr. Sushil Saruya, Dean of LMH, to present the Homeo Excellence Award to Dr. Makan Jagpal and recognize his compassionate life and selfless service to humanity. Dr. Amal Jagpal and Dr. Manish Jagpal will collect the award on his behalf. Please give a huge round of applause. Now I would like to call upon Dr. Rajesh Soper to shower with us his immense ocean of knowledge and inspire authority with his precious cases. Good morning, everyone. So we have a very short time. We are really late. So I will not take much of the time because I was not the speaker for today. It was Dr. Tanveer Hussein's session, but he could not come because of sudden demise of his father, and he conveyed his apologies for not being able to reach here, and he requested me to take this session. And I personally wanted to convey
my tribute to my first lecture, and I got a chance. So I'll not waste much of the time on these slides, but I got the chance 2 months earlier to go to this holy place in Kothil to feel the aura of Dr. Henneman. And this you all know, audience apartment, the meaning of this, you all know, dare to be voice. But we all not know where to say, when to say, and how to say this dare to be voice. And tribute to Dr. Henneman, he used divine science word in aphorism 52, which means this is a godly science. And God is the one who gives life and birth. And He is the one who is responsible to take the life. So, but how beautifully you have seen the case of renal cell carcinoma, where all hopes of life were not there, and surgeons were not able to do anything. And Dr. Manish's medicine has recovered patient completely, and he is living a healthy life. So limitless hope of homeopathy, emergency cases. This was my last lecture, and I am just repeating the same lecture because yesterday itself I got to know that I have to take some time here. I love this slide. Let's see, these are the pioneers. Dr. Kent, Will Moral Intellect, Dr. Bonnie Mercer, Location, Sensation, Modality, Concomitant, Dr. Allen, Keynotes, and Pathology. So all these masters, they use different methods, different approaches, but to reach to one thing that is pure. Patient needs only one thing that is pure. How you reach to the sublimum, it never matters. Which method you have selected, which school you have followed, that is secondary, but primary is result. And this is tribute to Dr. Dr. Praful Vijayakar sir. He said, mathematics, homeopathy is mathematics and limitless science. If you have followed the principles carefully, that is Vyasa, disposition, remedy, the cure should be there and cure will definitely come. In tribute to Sir, in 1994, someone called me just to find out a homeopath in the city who consults only with appointments. I was in second year when I first met Dr. Ramakant, and that patient was consulted for 1.5 hours, and after that he gave only one week, one dose. At that time he used to give only one dose, and I was surprised that what will happen with this dose. And after 15 days the patient was called, and the patient was improving very fast. And later, the patient showed astonishing results, and I holded the hand of Dr. Ramakant sir, and whatever I have learned from him. How to even talk to each patient, how to learn, how to even take the history, everything, every little thing he has taught. When I left him after 6 years, he told me only one thing: only sky is the limit. With a motto that just learn and share. Keep learning and keep sharing. And I was very fortunate to stay with him in his house for 2 years. And what I used to see, that he used to complete his clinic at
at 8:30 or 9. And after that, he used to take his dinner and come back to his chamber and used to spend a lot of time to study the books. And same I did with Manish for 2 years, and we learned together. We shared the same bedroom for 2 years. So I'll share few cases, but as the time will permit, only 30 minutes, because this is the time of Dr. House. So this is the case of respiratory failure and retinopathy. Second, coma, metabolic encephalopathy. Then sudden respiratory distress syndrome. And fourth is CKD with complete heart block. This is how I proceeded in each case. Remedy, miasm, which is process of disease. PQRS of the case, target organ, perception, conformity. Case 1. Baby the newborn born on 1/1/21 at 7 months, 12 days of the gestational age, no birth right, 52 NICU, was kept on high ventilator support. She did not show any recovery in 12 days. Her parents came on the 13th day as they were told about poor prognosis and little hope about her survival. They came with hope to homeopathy with hopeless and helplessness of health. So 12 days she was on ventilator and she did not show any sign of recovery. Now you can understand that what is the cost of ICU of a pediatric or this NICU for 12 days and with no hope. They could not take or click the picture in the ICU. It is also very difficult to show the documents, especially the pictures and videos, because patient is such a pain. And homeopaths they want actually के कोई picture मिल जाए और वो वहाँ पे दवाई दे या कैमरे से picture ले, but still we need something. So this is when she recovered. So I just took the pregnancy history. Mother was not happy since she became pregnant and pregnancy test was weakly positive. Throughout pregnancy, she had vomiting. She had already one daughter suffering from nephrotic syndrome, and she thought she will give birth to the second daughter with major sickness. If it happens, what would be her life? On 31st December 2020, water bag ruptured and liver pain started and heart rate of the fetus and mother increased. So she was admitted to DMC Hospital Ludhiana. Same night she had been, she gave birth to a baby girl and she was sad and depressed about it. LSCS was done. No birth cry, poor effort, tactile stimulation given, no crying, BFP into 30 seconds, birth cry weak. BFP 30 seconds, heart rate 98 per minute, SpO2 only 55%, intubated with ED, shifted to NICU, adverse over 5 to 7, no birth cry. Doctors told she is unable to breathe due to serious infection in the throat. So list of diagnosis, just have a look on it. Preterm for gestational age, low birth weight, respiratory distress syndrome, respiratory failure, extubation failure, perinatal asphyxia, shock, late onset of sepsis, bowel culture positive one, Echinobacter, pneumoniae, neonatal hyperbilirubinemia, retinopathy of prematurity shows zone 2 and 3 immature. USG cranium shows grade 1 germinal hemorrhage on right side, congenital pneumonia hemangioma. In 27 years of my practice, I have just seen first time this congenital pneumonia, hemorrhage, congenital pneumonia. The baby was totally in a helpless state. So these were the reports, the same diagnosis.
If you can see all these, can we save her life, her retina, her vision? If yes, then how? What should we do? If yes, then how to proceed in such cases or cases? This is aphorism 3. I will not spend some more time. If we understand the disease, then we are able to revert. Now, what was her disease? Physiology or pathology? Timeline, preterm, disease, no birth right, respiration failure, severe infections. But why all this happened? Why all this happened? It was actually a dead appearance. How dead appearance? अगर वेंटिलेटर उतार देते तो कैसे सांस लेगी? So ventilator is just helping her to stay in this world. So dead appearance, so many diagnoses, mental trauma, emotions, some shock, perception, understanding. But what was mother's perception? ऐसी कौन सी perception थी जिसके कारण बच्चे ने ये सोचा मैं सांस ही नहीं, मुझे सांस ही नहीं लेना, इंस्टेड मुझे जाना है यहाँ, I should die. So ordinal footnote 9, most severe disease may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also caused by the same means. Most serious disease can be developed just because of your imagination. God has given us the power to fantasize. What we fantasize, how much we fantasize, how much energy we put in that fantasy. Because that fantasy is from your subconscious mind. So this is what I usually share in every lecture. You can prescribe here if it is possible. You can prescribe here on the emotion. You can prescribe on the understanding of the patient. You can further prescribe on the senses. Then you can further go deeper, which is perception. If you have understood the person's correct perception, your prescription will be rock solid. So what was her miasm? Definitely syphilitic. What kind of syphilitic? I consider syphilitic two types. One is killer, another is non-killer. Like Alzheimer, this is not non-killer. Like this Parkinson, this is non-killer. But certain miasms which are killer, like carcinomas, advanced stage, this ventilator support, this is definitely a killer miasm. PQRS, severe throat infection. Perception, mother, she would give birth to a diseased daughter. पहली बच्ची को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो दूसरी भी वैसी ना पैदा हो या कोई और जैसी कोई सीवियर डिजीज हो. टारगेट ऑर्गन लंग्स, रेस्पिरेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, hemorrhage in the brain, right side of the brain. So anyone, which rubric we can think of from this perception? How to proceed? She would give birth to diseased daughter. What would be her future life? यहाँ पे कदम नहीं, उससे आगे भी सोचा. Perception is imagination of future.
I'll not take much time. Delusion, misfortune, images, which is perception. Then is second, hemorrhagic remedy. Third, serious throat infection. So ophidias has sensitivity in the neck. So remedy given was Naja 1M local application. And what they asked me, what will happen with this medicine? And I just told, if my medicine is correct, within 24 hours, she would be out of ventilator. They were confused. Doctor, वो 12 दिन से ventilator पे है, ये 24 घंटे में कैसे होगा? मैंने कहा, but if remedy is correct, she should come. Within 24 hours, ventilator was put as she started breathing normally, and in 4 days she was discharged from the hospital and brought to my clinic. So they are telling the same happened within 24 hours. So she was out of ventilator, and within 4 days she was discharged and was brought to my clinic. But still, parents were worried about her retinopathy because the retina was not completely developed. In 6 months, she started getting normal vision, and now she has perfect vision 14 inches on the scan. Yes, Alok. The sound is not there, but the baby is completely normal. She had no issues. She has never taken any medicine except that Naja 1M, which was locally applied and never given even internally. So Naja, fear of misfortune, 104 remedies, which is psychosis, sadness, during of that misfortune, psychosyphilitic, fancies of misfortune, only one remedy, syphilitic, delusion, images, misfortune of possible. Naja is one drug which just tries to see the next and that too in a negative way. Any complaint about throat or tongue or swallowing, first thing can rule out ophidia. The constrictions extend from throat to rectum, constriction, sensation in throat, all states are there, constriction of pylorus, stomach, sore clothing aggravate, constriction, closure, contractures, lacrices, constriction, sleep during only lacrices, swallowing, lacrices, constriction of liver. So, a very short case, next. Daughter of the patient called from Amritsar that her father is in ICU who has been on a temporary pacemaker since December, age 22. Without a pacemaker, heart rate decreases and they want to permanently implant it. He also suffers from chronic renal parenchymal illness, acute pyelonephritis, and sepsis. Creatinine level increases. Doctors wanted to start with dialysis and then implant a pacemaker, but sepsis rendered them helpless. He has fever, abdominal ache for the past 3 days. He wanted pee in his stool, lost consciousness, and stopped breathing on December 8. He had a hospital admission. He has one son married who is in Canada. His wife and grandson lived with him. His daughter was quarreling. She used to abuse, hit him, and used to call police in March 22. She went to her parents with his grandson and never returned. In ICU, he was wishing to see his grandson only. List of diagnosis: complete heart block, acute or chronic renal failure, sepsis, left acute pyelonephritis with renal papillary necrosis with hydroureteronephrosis.
This patient approached from Amritsar with a complete heart block और वो ये बता रहे थे कि अगर पेस मेकर की वायर भी हिलती है तो उसका हार्ट रेट डाउन जाता है और वो सेप्सिस के कारण पेस मेकर इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और उसकी रीनल फेलियर के कारण, लेकिन वो दोनों ही कंडीशंस के कारण उसका डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा और creatinine was more than 8. This was the patient. Again, the same I approached miasm syphilitic cause indignation suppressed anger. Perception resulted for second. Target organ here is heart and kidneys. And rubric selected ailments from anger vexation. Delusion resulted for second and complaints of the heart. I am moving fast because Dr. Matharu is waiting and I have to give him only 30 minutes. So remedy given was Aurum metallicum 1 local application every hour. Now what do we expect here? Patient ICU में है, उसको पेसमेकर लगाया हुआ है, वो इम्प्लांट करना है. What do we expect with homeopathy? क्या होगा? रेमेडी भी सिलेक्ट कर ले. And they approached only me कि भाई सिर्फ सेप्सिस ठीक हो जाए तो उसका पेसमेकर लग जाए. सिर्फ आप सेप्सिस ठीक कर दो, उसका जो है फीवर ठीक हो जाए तो पेसमेकर लग जाएगा, उसके बाद उसकी डायलिसिस हो जाए. So what is our expectation with homeopathy? Anyone? हमारा गैस पर क्या होना चाहिए और क्या होगा? पेसमेकर की लीड नहीं रहेगी, वो कैसे छोड़ देंगे हॉस्पिटल में से? कैसे छोड़ देंगे? On 12th December, pacemaker was removed because heart started improving. 14th, creatinine came 7.7, urine normal. Then patient was discharged without surgery. Dialysis and creatinine was 6.2. 3rd January 2023, he visited my clinic and his creatinine was 5.2. And just see these reports. 12 December 2022, left renal papillary necrosis with mild left hydroureteronephrosis. And 13th November, just few days earlier, left kidney is normal in size, where the cortical thickness is normal and echogenicity is increased, no calculus and no hydronephrosis detected. Necrosis disappeared. 1 साल से बंदे का ना डायलिसिस हुआ है, ना पेसमेकर लगा है, and patient is totally gone. And this is, he comes to my clinic every month. Last time he visited his son in Australia. He is not taking any medicine except the diabetic antidiabetics, which he is suffering since 20 years. Necrosis gone, heart is totally normal, low pace. Last day, the 1-year boy suffered with respiratory failure for which he was admitted in ICU and put on ventilator in USA on 30/1/23. Was passed at all. There was no improvement after 24 hours, so his mother contacted me. This is the baby. Patient is in USA and they contacted. Uski 6 hours calls आई and then
I asked what is the, this was the condition of the baby. One day earlier, he suffered with cough, vomiting, but no fever. Second day, he suddenly became breathless. He was brought to hospital. He was nebulized and sent home. But after a short while, his breathing got worse, requiring his parents to bring him back to the hospital to be put on a ventilator. Again, the same steps I used: nasal secretic collapse, PQRS. I have seen the video of that baby. The jerking respiration, target organ, lungs, respiration, medulla oblongata. Next day, his ventilator was removed and he was only kept on oxygen. Just see. I prescribed one medicine. I told this medicine should be applied to the patient, but they asked this is in the hospital. I told them कि इसको अप्लाई करने के लिए नर्स को बोलो चर्च से होली वाटर लेके आए, and they applied. And next day the baby was out of ventilator. This is follow up. Third day he was discharged from the hospital. Total calm. Collapse sudden and respiration jerky. Which medicine I would have given? Crotellus horridus. Crotellus horridus, 1 ml, local application every 1 hour, has completely cured that. So with all this, I am just finishing. I cannot show this case. Of coma. This is what the meaning of Audes Hepatic is. We cannot say, we cannot use these words, dare to be wise, but our cases should speak that what is the difference between allopathy and homeopathy. The patient should convey this message to the allopath that where they fail, where they stop, where they don't have any chance, where they don't have any hope, every homeopath can give this type of results, and patients will convey these messages to the. Thank you very much.